देखो एक बार स्क्रीन पे देखो, तो वैडन के जो यूजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके कुछ, एक तो सबसे पहली चीज़ साइट, हाँ, साइट आन का अपन, और आल्टर भी बोलते हैं, एज के रेफरेंस में यूज़ करेंगे, जैसे कि इश वैडे, देखो इश वैडे द्राइसिश इम अगस्त, मतलब कोई आपको बोल रहा है दैट ही विल बिकम 30 इन अगस्त, या इम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ही और शी बिकम 30, ठीक है। ये दिस इज एज। सेकेंड आई वॉज सेइंग बट नो मन, लाइक इफ यू से इश वैडे आस्ट इम नेक्स्ट ईयर, next year means my study will be over and I will become doctor next year. Is that okay? Yeah, clear इतना? Nomen, and this is site angavan, alter age. When you talk about age, I will become this much. Or if you say past, like mit Funsen voltage, I wanted voltage arst Vadan. So here Vadan is infinitive because modal verb. I wanted to become doctor at the age of 15. So here at the age, at the age. Or you can say in future also, like you said, na, mit filmsish village glücklich werden, huh? I want to become happy, glücklich und gesund werden. Munter, munter एक word पता है? Munter live, munter means very lively, energetic. So here again modal verb will, but future present, huh? Will is munter und glücklich werden. I want to become at the age of 50 means you are talking about future tense. 50 ईयर्स की एज में आप ऐसा बनना चाहते हो, और पास्ट में आप अपने चाइल्डहुड की बात करें, 15 ईयर्स की एज में मैं ऐसा चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम, क्लियर। और इफ़ यू हैव बिकम perfect tense, this is called perfect use with perfect tense pattern. So perfect tense first rule is sein plus geworden, okay, like ich bin, ich bin gestern, like somebody say ich bin, I have become 20 yesterday, ich bin gestern 20 geworden. It means he's talking about his age. He has become 20 years yesterday. He has completed 20 years. Huh? So again, geworden. So geworden means actually to become. यहाँ पे to have become. Okay. Like you say, mein Freund ist bekannt geworden. He has become popular. He has become popular. Klar? My friend has become. Okay. Yes. So this is the use of werden. If you want, I will send you this document. Huh? No need to write. Just you understand. Clear? Now we'll see how it is given in the book. Book में कैसे दिया हुआ देखो. So these are the sentences. Now can you join? Use this table. Join the words. Tell me. So I had made some columns. Okay. Nach 5 Jahre wird Arzt. हाँ. Once again. Nach 5 Jahre. 5 Jahren. 5 Jahren. Jahren. 5 Jahren wird Arzt. Yes. Meaning He will be, like after 5 years he will be. he will be or he will become doctor.
Yes, okay. Mit 22 will ich Dolmetscher werden. Willish means you are not 22, you are talking about future. At the age Yes. of 22, I want to become Dolmetscher, interpreter. Okay.